Okay. As we have already discussed the introduction to receptors, what basically the receptors are. Today we are going to start the bigger families of the receptor. And the first family is ion channel receptors. First family is ion channel receptors. First family. First family. First family. Okay. And these are ion channel receptors. As the name indicate, ion channels means there is something related to ions. Okay. We will discuss these things down the road later on. Okay. Listen and remember. These ion channel receptors are also called as inotropic receptors. Are also called as inotropic receptors. Also called as ino. Sometimes it may be asked in the MCQs. What is the second name for the ion channel receptors? The second name is inotropic receptors. The second name for ion channel receptor is inotropic receptor. Inotropic receptors. Because they are somehow linked with the ions. So that's why these are known as inotropic receptors, right? Types. Now come towards the types of the ion channel receptor. There are two types of the ion channel receptors, majorly. Two types of ion channel receptors, right? कौन-कौन से types हैं? The first type is ligand-gated ion channels. The first type is ligand-gated. Ligand-gated. What basically the ligand is, I have already told you people, but what is ligand, right? Ligand-gated ion channels. Ligand-gated ion channels. Right, first type. The second type is voltage-gated ion channel. What is meant by this? We will discuss later on. First, you will have to keep in mind the types of these ion channel receptors. Voltage-gated ion channels. Right? There are two types of the ion channel. The first type is ligand-gated ion channel, and the other one is voltage-gated ion channels. Now come to the structure of these ion channel receptors. Structure. Okay. As you people can see in this diagram number A, right? Diagram number A. This is the superior view of an ion channel receptor. If we see the ion channel, if the ion channel has been placed in the cell membrane, and we people see on the top of the ion channel. So on the superior view or on the top of the ion channel view, we can see the ion channel like this. Okay, as the figure A shows. ठीक है, जैसे कि शक्ल A में दिखाया गया है. ठीक है, it means that now I am going to write in points. You people also have to draw this diagram and also write that I am going to write, right? Okay. The ion channel, the ion channel, ion channel is made up of ion channel is made up of 5 proteins. 5 proteins, right? And these proteins are कौन कौन से प्रोटीन है अभी लिखो. First one, 2 alpha protein, 2 alpha protein, 2 alpha protein. As you people can see in the diagram, this one is 1 alpha protein and this one is second alpha protein. So it means that one ion channel is made up of 2 alpha proteins, and
These proteins, these proteins are basically made up of amino acids. As I have already told you people, in majority of the cases, the receptors are proteins. Receptors are proteins. So definitely different subunits of the receptor will be made up of amino acid and receptor are protein. Protein are made up of amino acid. देखो मैं सारी चीजों को ना रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है आपको पता है कि ज्यादातर केसेस में जो रिसेप्टर होते हैं प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन किस चीज से मिलकर बनते हैं अमाइनो एसिड से। ठीक है इसका मतलब डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलेंगे तो डिफरेंट सब यूनिट्स बनेंगे किसके उस रिसेप्टर के। और जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि जो आयन चैनल प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं या जो आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं ये 5 सब यूनिट्स मिलकर बने होते हैं। ठीक है जिनमें से 2 अल्फा प्रोटीन्स होती हैं या 2 अल्फा सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है हम इनको इससे भी लिखते हैं तो 2 अल्फा प्रोटीन और 2 अल्फा प्रोटीन सब यूनिट्स सब यूनिट्स राइट। नेक्स्ट वन वन बीटा प्रोटीन वन बीटा प्रोटीन प्रोटीन सब यूनिट। ठीक है नेक्स्ट वन इज so listen these are 2 alpha subunits these alpha subunits one beta subunit one gamma subunit and one delta subunit right 2 alpha one beta one gamma and one delta subunit and total are 5 subunits or 5 proteins are going to make one ion channel receptor right okay one gamma protein subunit one gamma protein subunit right next one is one delta subunit one delta protein subunit right as you people can see in this diagram. Two alpha proteins, one beta protein, one gamma protein, and one delta protein subunits. ठीक है अच्छा अभी आप लोग एक और बात भी यहाँ पे देख सकते हो हम इनको ना हम इनको ये भी कहते हैं वन वन आयन चैनल रिसेप्टर वन आयन चैनल रिसेप्टर रिसेप्टर is is made up of pentameric protein ठीक है पेंटामेरिक मतलब ये 5 प्रोटीन से मिलकर इसलिए पेंटामेरिक प्रोटीन वन एंजाइम रिसेप्टर इज मेड अप ऑफ पेंटामेरिक प्रोटीन प्रोटीन्स ठीक है ओके तो ये आपको नजर आ रहा है ठीक है ये सुपीरियर व्यू सो यू कैन से सुपीरियर व्यू सुपीरियर व्यू ऑफ ए रिसेप्टर विच इज आयन चैनल इन नेचर ठीक है और आप लोग ये भी कह सकते हो कि ये हेड व्यू है इसका ऊपर से देखना हेड व्यू राइट ओके नेक्स्ट नो कम टुवर्ड्स द डायग्राम नंबर बी डायग्राम नंबर बी ये हो ठीक है आप लोग देख सकते हो इन डायग्राम नंबर बी दिस इज द सेल मेम्ब्रेन दिस पोर्शन इज सेल मेम्ब्रेन राइट दिस इज द पोर्शन विच इज सेल मेम्ब्रेन और उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है ये हमारा रिसेप्टर जो है ना दैट हैज बीन इंसर्टेड इनटू द सेल मेम्ब्रेन राइट एंड एज पीपल कैन सी 6 nanometer the receptor is outside of the cell membrane 6 nanometer is outside of the cell membrane 3 nanometer is in the cell membrane and 2 nanometer is in the intracellular space is in the intracellular space okay we can write also here basically we are here talking about the structure of an ion channel receptor okay 6 nanometer 6 nanometer is in extracellular space extracellular space ठीक हो गया फिर उसके बाद राइट 3 nanometer is in the cell 3 nanometer is in cell membrane right the next is 2 nanometer 2 nanometer is in intracellular intracellular space
which means that 3 nanometer is outside of the cell. 3 nanometer is in the cell membrane and 2 nanometer is inside of it, which is facing the cytosol, right, or cytoplasm, right? Okay. Next point, very, very important. Next point is very, very important. As you people can see in the diagram, next point is as you people can see in diagram number A, right? This is diagram number A. This this pore size is 0.7 nanometer in diameter. Means that through this 0.7 nanometer, the ions are going to be passed because it is an ion channel receptor. But it is an ion channel receptor. The pore size is 0.7 nanometer. The pore size of receptor is 0.7 nanometer, right? Through which the ions are basically going to be passed in or passed out. Okay. Next, very, very important one. Next, very, very important point that you people have to always keep in mind. As as you can see in the diagram number A and B as well, both alpha subunits. Listen, both alpha subunits and one gamma subunit. They are combined. As we can say, there is a sandwich of gamma subunit between two alpha subunit. ठीक है, दो अल्फा सबयूनिट के दरमियान एक गामा सबयूनिट सैंडविच हुआ हुआ है. ठीक है, और इन दो अल्फा सब यूनिट्स और एक गैमा सब यूनिट्स के ऊपर जाके दो लैगिंड के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है. ठीक है, एक अल्फा सब यूनिट है, फिर दूसरा अल्फा सब यूनिट है, तो उनके दरमियान क्या है, गैमा सब यूनिट. ठीक है, इन दोनों के जंक्शन के ऊपर दोनों साइडों पे, ठीक है, दो लैगिंड मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, देखो जैसे कि आपको नजर आ रहा है. ठीक है, इट्स मीन्स दैट ये जो हमारा जो रिसेप्टर होता है, इसको एक्टिवेट होने के लिए या इनहिबिट होने के लिए दो लैगिंड के मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं, जो कि इस जगह पे आके अटैच होते हैं. ठीक है, एक भी अल्फा और गामा के दरमियान आकर अटैच होता है और दूसरा भी अल्फा और गामा के ऊपर आकर, जैसा कि डायग्राम नंबर बी में दिखाया गया. ठीक है, ये अल्फा सब यूनिट, ये अल्फा सब यूनिट, तो इधर करके क्या होगा, गामा सब यूनिट विच इज नॉट शोन हियर. इसको ये गामा सब यूनिट को यहाँ पे नहीं दिखाया गया लेकिन वो इधर है. ठीक है, तो ये देखो इधर से और इधर से ये क्या है, दोनों अल्फा के ऊपर अटैच हो रहे हैं और आधा किधर अटैच हो रहा है, गामा के ऊपर. ठीक है, तो वी कैन राइट हियर इन द वे दैट two ligand molecules are required. Yeah, to open to or block open or block the ion channel ion channel to open or block the ion channel, we need we need we need two molecules of ligand, right? Okay, the next point is, as you people know that each ion channel is made up of five pentameric subunits. also लोगों को पता है कि एक जो आयन चैनल है वो पांच प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है. इसी तरह अब उन पांच प्रोटीन में से जो हर एक प्रोटीन है, ईच प्रोटीन फ्रॉम ऑल दोज प्रोटीन्स, ठीक है, उनमें से हर एक जो प्रोटीन है उसका जो वेट होता है ना वो होता है 40 से 58 किलो डाल्टन. ठीक है, द वेट ऑफ द वेट ऑफ ईच सब यूनिट ऑफ ईच सब यूनिट. काइंडली कोई बच्चा ना लिखे. द वेट ऑफ ईच सब यूनिट. ठीक है, मतलब जैसा आपको पता है, टू अल्फा वन बीटा वन गैमा एंड वन डाटा, इनमें से हर एक सब यूनिट है ना वो उसका जो वेट होता है वो होता है ऑलमोस्ट 40 से 58 किलो डाल्टन. ठीक हो गया, हर एक समय.
Okay. Okay. Next point is, as you people know that this is the protein. This is for all the receptors. As you people already know, in majority of the cases, all the receptors are protein in nature, and you people know that प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है। आपको पता है कि हर जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स मिलकर बनती है। ठीक है। द आयन चैनल द आयन चैनल इज अप ऑफ अमाइनो एसिड्स एसिड्स एंड दिस पॉइंट यू पीपल नो वन अमाइनो एसिड हैज सी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल। ठीक है। तो इसी तरह अगर एक प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से बनी है तो उसका भी एक एन टर्मिनल होगा और एक सी टर्मिनल होगा। ठीक है। जैसे कि आप लोग ये इस डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम नंबर, ये जो सेल मेम्ब्रेन वाला डायग्राम, दिस डायग्राम, दिस वन, डायग्राम नंबर सी, दिस, we can see in this diagram. This is the N terminal, this one, and this is C terminal, right? Amino acid and one terminal and one terminal is N and other is C terminal, right? Okay. You people can see in this diagram, diagram number C, N terminal is also outside of the cell membrane, and C terminal again is outside, or you can say in the extracellular matrix or fluid. सही है कि एक टर्मिनल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और दूसरा भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ये एक एग्जांपल के टाइप रिसेप्टर के टाइप में है। ठीक है। ये भी हो सकता है किसी जगह पे कि जो एन टर्मिनल होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है, और जो सी टर्मिनल होता है वो इन साइड ऑफ द सेल होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, इसमें से ये जो रिसेप्टर है इसके एक जो टर्मिनल है वो बाहर वाली साइड है और दूसरा टर्मिनल भी बाहर वाली साइड है। ठीक है। क्योंकि हर जो रिसेप्टर होता है आयन चैनल वो डिफरेंट, उसकी भी आगे सब टाइप्स होती है। तो किसी सब टाइप में क्या होता है, उसके एन टर्मिनल वो बाहर होता है और सी टर्मिनल अंदर होता है। सही है। और कुछ रिसेप्टर में क्या होता है, दोनों टर्मिनल बाहर होते हैं। और किसी रिसेप्टर में ये भी हो सकता है कि इसके दोनों टर्मिनल जो है वो सेल से बाहर, और ये दोनों टर्मिनल सेल के अंदर। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, आपको पता नहीं ये इसके सब यूनिट्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है। टोटल 5 सब यूनिट। इन ऑल सब यूनिट्स, इन ऑल सब यूनिट्स, इन सब यूनिट्स में देयर आर देयर आर फोर फोर अल्फा हेलिक्स, 4 अल्फा हेलिक्स होते हैं। ठीक है। ये देखो, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो डिफरेंट सब यूनिट्स मैंने ड्रॉ किया हूँ। ठीक है। इसके अंदर ये जो स्प्रिंग टाइप जो है ना चीज, या ये जो बीटा और डेल्टा सब यूनिट्स में ये वाली जो डायग्राम है, ये वाली, ये क्या है, अल्फा हेलिक्स। ठीक है। एक सब यूनिट के अंदर कितने अल्फा हेलिक्स हो गए, 4। तो टोटल कितने सब यूनिट्स हैं, 5। तो पूरे आयन चैनल के अंदर कितने अल्फा हेलिक्स हो जाएंगे, 20। ठीक है। इन वन आयन चैनल रिसेप्टर, इन वन आयन चैनल receptor there are 20 अल्फा हेलिक्स। ठीक है। एक जो पूरा आयन चैनल है उसके अंदर 20 अल्फा हेलिक्स होते हैं। ठीक है। और उन वो जो सारे अल्फा हेलिक्स हैं, ठीक है, उनमें से जो एक सब यूनिट होता है ना, ये एक अल्फा हेलिक्स होता है, उसको हम M2 यूनिट कहते हैं। ठीक है। जैसा कि ये देखो, ये वाले डायग्राम जिसमें ये देखो, ये एक सब यूनिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है। सॉरी, अल्फा हेलिक्स। ठीक है। ये जो स्प्रिंग टाइप है, ये जो इस तरह का कि मैंने ड्रॉ किया है, ये इस तरह के एक सब यूनिट है, ये वाला, ये 1 2 3 और ये 4।
ये इस वाली डायग्राम है, ये वाली डायग्राम जो आप लोग देख सकते हो ये। ठीक है, तो इनमें से जो एक अल्फा है, ये सारे अल्फा हेलिक्स हैं, ये भी अल्फा हेलिक्स है, ये भी। ठीक है, तो इनमें से जो एक अल्फा हेलिक्स है ये, इसको हम M2 सब यूनिट कहते हैं, या M2 यूनिट कहते हैं, सब यूनिट ऑफ यूनिट। ठीक है, राइट। ओके, फ्रॉम 4 अल्फा हेलिक्स इन वन सब यूनिट, इन वन सब यूनिट, एक सब यूनिट के अंदर जो 4 अल्फा हेलिक्स हैं, ठीक है, उनमें से एक अल्फा हेलिक्स को हम क्या कहते हैं, M सब यूनिट। वन हेलिक्स इज कॉल्ड, वन हेलिक्स इज कॉल्ड M2 यूनिट। जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये देखो, ये M2 यूनिट, M2 यूनिट। ठीक है, ये जो बीटा और जो डेल्टा सब यूनिट है, इनमें मैंने ये देखो इस तरह करके एक डायग्राम बनाई हुई है, ये इस तरह करके, ये। ठीक है, और दूसरी इस तरह, ये भी, इसको ना, ये भी M2 यूनिट, एक ने उसको बड़ा करके दिखाया हुआ है। ठीक है, सब ये भी M2 यूनिट्स। ठीक है, ओके। ये M2 यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, because they are going to provide the gating mechanism for the ion channel. When any ligand is going to attach with the receptor, then these M2 units basically undergoes some conformational change and going to open the ion channel through which different ions will cross the membrane on the either side. ठीक है, is there any question till now you people can ask? Okay, next point. Almost the structure of the receptor is over. Next point is action. What is meant by this action? It means that these receptors respond in milliseconds. क्या मतलब है? These receptors, these receptors give response in milliseconds. आपको पता है ना कि ब्रेन के अंदर न्यूरो ट्रांसमिशन होती है, तो वहाँ पे आयंस का इनफ्लक्स होता है, आउटफ्लक्स होता है। तो इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स जो है ना, वो बेसिकली ये आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड चाहिए, तो वहाँ पे जो क्विक और फास्ट रिस्पॉन्ड होता है ना, वो इन आयन चैनल की वजह से मिलता है। ठीक है, मिली सेकंड, तो रिसेप्टर जो है वो मिली सेकंड में अपना रिस्पॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट इज द एग्जांपल्स of these ion channels. This is very important. You people have to keep in mind for the next 5 years. The example of different receptors. Okay. Example of these receptors. First, first example, nicotinic acetylcholine receptors. First example is nicotinic nicotinic acetylcholine receptors. Right? The first example. The second example is N NMDA receptor. क्या नाम है? NMDA receptor. These are different type of ion channel receptors located in different organs of the body and uh, respond in different conditions. ठीक है, जिस तरह ये निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर जो है, ये कब रिस्पॉन्ड करते हैं? व्हेन देयर इज सम ऑटोनोमिक और स्केलेटल मसल मूवमेंट बॉडी में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आप कोई स्केलेटल मसल की वजह से वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं, वहां पे भी निकोटिनिक एसिड का रोल है, रिसेप्टर्स का रोल है। फिर उसके बाद ये जो, जब आपकी ऑटोनोमिक न्यूरो ट्रांसमिशन होती है इन केस ऑफ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो वहां पे भी निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर का रोल होता है, राइट। एंड दिस एनएमडीए रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द ब्रेन। ठीक है, एनएमडीए का क्या मतलब है? एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, क्या होता है? एन मिथाइल एस्पार्टेट, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट।
receptor, इसलिए इसको NMDA receptor कहते हैं. Okay, next receptor is AMPA receptor. क्या है? AMPA receptor. AMPA receptor. Next is ryanodine, ryanodine, ryanodine receptors. This ryanodine receptor is very important. You people have to keep in mind when I will be discussing the mechanism of contraction of different muscles like skeletal, smooth, and cardiac muscle. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना. It's very important. Okay, next example is GABA receptor. क्या है? GABA receptors. GABA, GABA. GABA, GABA का क्या मतलब होता है? गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड. क्या होता है? गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड. GABA receptors. Okay, next is glycine, glycine receptors. Okay, next is 5-HT3 receptors, right? Okay, why I have written these two types in different colors? These receptors written in green color are excitatory in nature. ये excitatory receptors हैं, ये वाले, ये जो मैंने ग्रीन में लिखे हैं, ये जो excitatory, excitatory, ठीक है. व्हाट इज मेड बाय दिस एक्साइटेशन? कि जिस ऑर्गन पे, जिस सेल पे, जिस टिश्यू पे ये मौजूद होते हैं, जब ये ओपन होते हैं ना, देयर इज समथिंग रिलेटेड टू इंक्रीज इन द पोटेंशियल. क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है किसी भी सेल टिश्यू का, ठीक है, वो ज्यादा होता है, तो वो सेल एक्साइट होता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये सारे रिसेप्टर जो है, दीज आर एक्साइटेटरी रिसेप्टर इन नेचर. ठीक है, और ये जो मैंने इधर लिखे हैं जैसे गाबा, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, ग्लाइसिन और 5-HT3 रिसेप्टर, ये है, ये सारे इनहिबिटरी हैं. कि जिस सेल पे ये मौजूद होते हैं, जब ये रिसेप्टर ऑन होता है तो वो सेल इनहिबिट हो जाता है. इनहिबिटरी, इनहिबिटरी. ठीक हो गया. अच्छा, अब एक और बात याद है. दिस गाबा रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, ये ब्रेन में मौजूद होता है. एंड दिस ग्लाइसिन रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड, राइट. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द ion channel receptors. Okay. The next heading of the ion channel receptor is gating mechanism of ion channel. What is meant by this gating mechanism? Gating mechanism का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब लाइगेंड इस रिसेप्टर के साथ आके अटैच होता है तो ये चैनल ओपन किस तरह होता है. दिस इज द गेटिंग मैकेनिज्म. जाहिर सी बात है, जब तक ये चैनल ओपन नहीं होगा तब तक यहाँ से आयंस का इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स नहीं हो सकता. ठीक है, तो इसलिए हम फिर पढ़ते हैं गेटिंग मैकेनिज्म, राइट. ओके. As in the previous discussion, as in the previous discussion, we people have studied the M2 subunits. ठीक है, यहाँ नजर आ रहे हैं ये, हमने पढ़े थे ये M2 subunits है. Those are present in the different subunits of the receptors, right? And one helix is known as uh, M2 unit, right? Okay. First point, M2 units. M2 units forms forms the lining of lining of channel, राइट. मतलब ये M2 यूनिट्स है ना, ये हर, जाहिर सी बात है, आपने पीछे लेक्चर में देखा है कि हर यूनिट के अंदर ये स्प्रिंग लाइक मौजूद होती हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक होते हैं, ये देखो यहाँ पे. ठीक है, ये देखो, दीज आर. नेक्स्ट पॉइंट, each each M2 unit is attached with
is attached with alpha subunit, alpha subunit of, मतलब जो हर सबयूनिट होता है ना वो अल्फा जो यूनिट होता है रिसेप्टर का उसके साथ अटैच होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो लाइगेंड होता है वो किस किस के साथ अटैच होता है। ये देखो इस जगह पे लाइगेंड हमारा अटैच होता है, ये आप लोग ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखो अल्फा सब यूनिट के साथ लाइगेंड अटैच होता है, तो ये रिसेप्टर ओपन और क्लोज कब होता है, जब इसके साथ लाइगेंड अटैच होता है। तो अल्फा सब यूनिट्स जो हैं ये ज्यादा रोल प्ले करते हैं इस चैनल को ओपन करने में, तो इसलिए इन सब यूनिट के साथ सारे यूनिट्स के जो M2 पार्ट्स होते हैं ना वो अटैच होते हैं। तो जैसे इसके साथ लाइगेंड अटैच होता है M2 यूनिट्स के साथ, सॉरी अल्फा सब यूनिट के साथ, तो उसके साथ जो सारे लिंक्ड M2 यूनिट्स होते हैं हर उसमें यूनिट में वो क्या हो जाते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं। वो अपनी जगह से कैसे हटते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अटैच विद अल्फा सब यूनिट ऑफ चैनल, राइट। अब क्या होता है व्हेन लाइगेंड अटैच विद अल्फा सब यूनिट ऑफ रिसेप्टर, द M2 the M2 units becomes straight, becomes straight, mm, comes and comes out। मतलब क्या होता है उनकी केमिस्ट्री बदल जाती है, उनका शक्ल चेंज हो जाती है। कैसे शक्ल चेंज होती है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड कम्स आउट दैट causes the opening of the channel, that causes the opening of channel, right? Listen and see in this diagram, let's suppose for example when the channel is closed, when the channel closed, closed, जब चैनल क्लोज होगा, ठीक है, तो क्या होता है कि these M2 units are like this। मैंने एक यूनिट को यहाँ पे ड्रॉ किया, आई हैव ड्रॉन वन यूनिट एंड अदर वन विल बी लाइक दिस। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो कि अभी इस टाइम जब चैनल क्लोज है तो ये इस तरह अरेंज है। M2 यूनिट्स, दीज आर M2 यूनिट्स, ये M2 यूनिट्स है, ठीक है। तो ये देखो ये इन्होंने अपने आप को किस तरह अरेंज किया हुआ है जब चैनल बंद है कि आंच नहीं गुजर सकती, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सारे यूनिट्स को टाइट किया होता है दरमियान से, ठीक है। अब क्या होगा व्हेन द ligand is going to attach over here, let's these are the units as you people can see in this diagram। ये देखो या ये अल्फा सब यूनिट है, ये वाला अल्फा सब यूनिट है, ये वाला अल्फा सब यूनिट है, और ये ligand अटैच हुआ है, ये वाला ligand अटैच हुआ है। अब इसी तरह अब नीचे वाले डायग्राम में आ जाना आप लोग, इस वाले, तो ये हमारे अल्फा सब यूनिट्स हैं, ठीक है। ये भी अल्फा सब यूनिट है, ये भी अल्फा सब यूनिट है, ठीक है। अब क्या होगा व्हेन द ligand is going to attach, जस्ट आई हैव रिटन ओवर हियर, राइट। यहाँ पे क्या होगा ligand अटैच हो गया, इधर ligand अटैच हो गया यहाँ पे ये, और इधर भी ligand अटैच हो गया। अब क्या होगा सो व्हेन द ligand will going to attach, what will happen with these M2 units, these M2 units becomes like this, ये स्ट्रेट हो जाती है इस तरह, दोनों मतलब हर यूनिट में, ठीक है। नाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पाथ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पाथ। कब क्या हुआ जब ligand अटैच हुआ इधर यहाँ पे, ये ligand अटैच हुआ है, ठीक है। M2 यूनिट्स को क्या हुआ कि वो क्या हो गए स्ट्रेट, ये M2 यूनिट्स है, और ये भी क्या है M2 यूनिट। अब देखो नो, नो लिसन,
नो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पाथ। ठीक है, ये देखो ये पाथ बन गया। दिस इज द वे, दिस इज द वे थ्रू विच, दिस इज द वे थ्रू विच द थिंग्स may come out and come inside of the cell। ठीक है, ये आप लोगों को पता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और ये क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो क्या हो सकता है, आयन यहाँ से अंदर भी आ सकते हैं और क्या हो सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। एंड लिसन एंड रिमेंबर, different ion channels are linked with different ions। जिस तरह let's suppose for example you people have studied the sodium channels, ठीक है, कैल्शियम चैनल्स, ठीक है, क्लोराइड चैनल्स, पोटाशियम चैनल्स। क्या है, पोटाशियम चैनल्स। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सेल और टाइप ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, कि किस जगह किस सेल पे कौन सा चैनल होगा, तो वहाँ जहाँ पे उसमें उसके साथ जब लिगैंड अटैच होगा, ठीक है, तो वो कौन से आयंस को अंदर आने देगा। अगर सोडियम आयंस अंदर आएंगे तो वो सोडियम चैनल होगा। अगर क्लोराइड आयंस होंगे तो वो क्लोराइड चैनल होगा। अगर पोटेशियम आयंस बाहर जाएंगे तो वो क्या होगा, पोटेशियम चैनल होगा। ठीक है, लिसन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये एक चैनल है, ये मैंने ये वाला चैनल बना रहा हूँ, जो चैनल अभी आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द चैनल लाइक दिस एज वेल। जैसे मैं कहता हूँ ये सोडियम चैनल है, तो मैं क्या कहता हूँ ये सोडियम चैनल है। जाहिर सी बात है, इधर इसकी पॉकेट्स बनी हुई है यहाँ पे, where the ligand is going to attach। ठीक है, एंड दिस इज सोडियम चैनल, ये सोडियम चैनल, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द surface of the cell or the cell membrane। right, again there is an other ion channel receptor is there। this is very important concept that I want to share with you people। right, again here is the pocket, pocket is the place where the ligand is going to attach, it means these are the alpha subunits of the ion channel through which the ligand is going to attach। right, right, ये है सोडियम चैनल। ठीक है, और ये है क्लोराइड चैनल। ठीक है, ओके, अब क्या होगा, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल द ligand is going to attach with this ion channel, and what will happen now, there will be influx of sodium ions, there will be influx of sodium ions into the cell। let's suppose these are the sodium ions। ठीक है, एंड ये सोडियम चैनल है, तो जाहिर सी बात है, एंड लिसन एंड रिमेंबर, you people have to tell me where the sodium ions are in excess, in the extracellular fluid or in the intracellular fluid। you people have to tell me in the comment section or in the chat section where the sodium ions are in excess, in the extracellular fluid or in the intracellular fluid। Yes, exactly, Zishan. Very good. Sodium channel are in excess in the extracellular fluid, and this is the sodium channel, and ligand has gone attached with the receptor. Now, definitely, where the ions are in excess, they will move from that area where they are in excess to the area where there is a deficiency of that particular ion. Let suppose we are discussing the sodium ions, right? So these sodium ions will come inside of the cell, and definitely this cell will undergo the phenomena of depolarization। Depolarization. Sodium ions are coming in, so they will cause depolarization। Right? Again, on the other side, again on the other side, you people have to tell me where the chloride ions are in excess. Where the chloride ions are in excess. Inside of the cell or outside of the cell or in the extracellular fluid. Yes, exactly, extracellular fluid. So when the so when any ligand is going to attach with the channel, and the channel is particular of chloride, ठीक है, तो क्या होगा, क्लोराइड आयन अंदर आएंगे, क्लोराइड आयन किधर आएंगे, अंदर आएंगे, क्योंकि क्लोराइड आयन बाहर ज्यादा होते हैं, वो उधर से उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे कम है। ठीक है, तो क्लोराइड आयन जब सेल के अंदर आएंगे
अब ये यहाँ पे एक्सेस में होते जा रहा है कलर, और आपको पता है व्हेन द सेल इज गोइंग टू बिकम नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पे, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज हो रहा है। द सेल में अंडरगो द फिनोमेना ऑफ रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ठीक है, डेफिनेटली अगर पहले सेल की मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई हुई थी, अंदर पॉजिटिव था, ठीक है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता अंदर नेगेटिव बढ़ रहा है, तो सेल की मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन की तरफ चली जाएगी। द अदर फिनोमेना में भी हाइपर पोलराइजेशन, अदर फिनोमेना में भी हाइपर पोलराइजेशन, right? Why there is hyperpolarization? Well, if listen and remember, you people already know this concept. I have already told you people in the class the difference between depolarization, repolarization, and hyperpolarization. If the membrane is going to gain its polarity back from the depolarization, it will be considered as a repolarization. And if the membrane is already at the resting membrane potential and the negativity inside of the cell is going to be increased due to any reason, either the negative ions are coming inside of the cell or positive ions are going to leave the cell. In both cases, if the cell is at the resting potential, that phenomena will be considered as hyperpolarization. It means that the negativity inside of the cell is going to be increased below its resting membrane potential. ठीक है, तो ये होता है hyperpolarization. And again, let's suppose, for example, if we talk about another concept, same here, let's suppose if I say there is another channel, there is an other channel, and this channel is particularly of the potassium ions. This channel is particularly of the potassium ions. Okay, the ligand has gone attached. So what will happen basically? Potassium ions are in excess in the intracellular fluid. So definitely when the ligand will be going to open, there will be outflux of these potassium ions outside of the cell. These are the channels. Listen and remember, the channel and transporter are different. The channel and transporters are different. So these potassium ions will move outside of the cell because you people know that potassium ions are in excess in the intracellular fluid, right? So when the channel will be open, these potassium ions will move outside of the cell, will move outside of the cell, and this cell will undergo the phenomena of हाइपरपोलराइजेशन. क्या होगा? सेल के अंदर से क्या होगा? हाइपरपोलराइजेशन होगा. हाइपरपोलर क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयन सेल से बाहर जा रहे हैं, सेल के अंदर नेगेटिविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये फिनोमिना भी क्या होता है? हाइपरपोलराइजेशन. ठीक है, तो ऑल द प्रोसेसेस may happen while depending upon the type of the cell and type of ligand and type of ligand. Let's suppose for example, अगर किसी जगह पे कोई न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल नॉर एड्रेनालिन, इस तरह डोपामीन है, इस तरह सीरोटोनिन है, ठीक है, ये डिफरेंट जो लाइगेंड है, जब ये किसी चैनल के साथ अटैच होते हैं जाके, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेल ऑन विच द लाइगेंड इज गोइंग टू अटैच, दैट डिसाइड्स वेदर इट इज गोइंग टू कॉज विच इफेक्ट. ठीक है, जिस तरह ये क्लोराइड चैनल है ना, ये ज्यादातर ब्रेन में होते हैं, इधर होती है ब्रेन में, और इनके साथ जो लाइगेंड अटैच होता है वो होता है गाबा. क्या होता है? गाबा. ये जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये गैमा अमाइनो ब्यूटाइलिक एसिड, ये ब्रेन में होता है, ऑलरेडी आपको पता है, और ये इनहिबिटरी होता है. ये क्या होता है? इनहिबिटरी. क्यों इनहिबिटरी है? अब ये देखो भाई, गौर की बात है. इनहिबिटरी मैंने क्यों बका था? क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि इसके साथ क्या, ये जो गाबा होता है, गैमा अमाइनो ब्यूटाइलिक एसिड, व्हिच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, एंड व्हेन इट अटैचेस विद इट्स क्लोराइड चैनल्स, एंड लिसन एंड रिमेंबर, ये हमेशा क्लोराइड चैनल के साथ अटैच होता है. तो जाहिर सी बात है, जिस सेल के ऊपर ये गाबा जाके अटैच होगा, गामा अमाइनो ब्यूटाइलिक एसिड अपने इस चैनल के साथ, अपने इस चैनल के साथ, तो डेफिनेटली वो क्लोराइड के साथ लिंक है. तो क्या होगा जब ये गाबा के अटैच होगा? अगर मैं कहता हूँ कि ये गाबा है, ये लाइगेंड है ना हमारा गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटाइलिक एसिड, अगर मैं कहता हूँ जब ये चैनल के साथ अटैच होगा, तो जाहिर सी बात है, ये हमेशा क्लोराइड के साथ लिंक होगा, क्लोराइड आयन उस सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो सेल क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन की तरफ जाएगा, या रीपोलर, मतलब द सेल विल गो टुवर्ड्स द एक्सट्रीम ऑफ इनहिबिशन, इनहिबिट होगा वो सेल. तो इसलिए हमने कहा था कि यानी ये गाबा के जो रिसेप्टर होते हैं वो इनहिबिटरी होते हैं, वो सेल को इनहिबिट करते हैं. किस तरह इनहिबिट करते हैं? दिस इज द मैकेनिज्म हाउ दिस GABA neurotransmitter is going to cause the inhibition of a particular cell. So this is all about the today's discussion.